नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आज आम गोटे इम्पोर्टाट चैप्टर ला नीना एंड एल नीनो विषय टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कशन करवा। यही क्लास टी आगामी ओपीएससी एएसओ सहित ओडिशा पुलिस एसआई और OSSC पीओ अति गुरुत्वपूर्ण रहिबो। आपण क्लास टी को संपूर्ण देखंतु एवं ला नीना एंड एल नीनो संपर्क रे सब कांसेप्ट आपनकर क्लियर हो जिवो। आपण एही क्वेश्चन गुडी के आगामी एग्जाम रे देखिया पई मिलिबो। चलंतु क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्टिंग करिवा। हमर आज प्रथम क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द स्पेनिश टर्म एल नीनो एंड व्हाई वाज इट नेम्ड सो। एल नीनो रो मीनिंग कोन एवं एहार नाम काहे कि दिया जायछि। एल नीनो मीनिंग होछि द लिटिल बॉय और क्रेस्ट चाइल्ड नेम्ड बाय पेरुवियन फिशरमैन बिकॉज़ द वार्म ओशन करंट यूजुअली अपीयर्स अराउंड क्रिसमस। यार ना दिया जाइतिला जने पेरुवियन फिशरमैन के द्वारा काहे ना वार्म ओशन करंटा जनरली अपीयर करा जाए क्रिसमस समय रे। व्हाट डज द टर्म ला नीना मीन इन स्पेनिश एंड व्हाट इज इट्स अल्टरनेटिव नेम। ला नीना रो माने कोन एवं हर अल्टरनेटिव नेम टी कोन। ला नीना रो माने होची द लिटिल गर्ल, इट इज आल्सो कॉल्ड एल भेजो बा द ओल्ड मैन और आकु मध्य कह जाए कोल्ड इवेंट बोली कह जाए, अर्थात एल नीनोटा हॉट ला नीनाटा कोल्ड। इन व्हिच स्पेसिफिक ओशन रीजन डज द ENSO phenomenon primarily originate। ENSO means एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। यार आंसर होची द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। यह केवल सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन रे देखिया पई मिलता है। What does the full form of the acronym ENSO stand for? ENSO रो full form होची El Niño Southern Oscillation। What is the key ocean surface temperature difference between El Niño and La Niña? यार आंसर होची El Niño causes abnormal ocean warming whereas La Niña causes abnormal ocean cooling in the equatorial eastern Pacific। El Niño का ocean टा को वार्म करि थाए और La Niña टा कूल करि थाए। What happens to the Pacific easterly trade winds during an El Niño event? Pacific easterly trade winds रो कौन घटिता है? The trade winds weakens significantly or can even reverse direction to blow from west to east। El Niño प्रभाव रे ट्रेड वाइंड टा वीकेन हो जाए एवं तार डायरेक्शन मध्य रिवर्स कर जाए वेस्ट को ईस्ट को, माने वेस्ट रु ईस्ट को परिचालित होता है। How do trade winds behave during a La Niña episode? La Niña episode रे trade wind रा कौन से behave करता है? Trade winds become significantly stronger than normal, blowing vigorously from east to west। Trade wind टा कौन करे? Significantly stronger than normal, माने normal wind ठारू strong हो जाए एवं east रु west को blow करिता है। आमे जानले कि एल नीनो टा west रु east, ठीक से बोली ला नीनाटा ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज द जनरल इंपैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन द इंडियन साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल। एल नीनोटा हमर जो इंडियन साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल अछि ता ऊपर क्री प्रभाव प्रगाई थाए। एल नीनो जनरली वीकेंस द इंडियन साउथ वेस्ट मानसून ऑफन लीडिंग टू रेनफॉल डेफिसिट्स एंड ड्राउट्स। एल नीनोटा कोन करे साउथ वेस्ट मानसून को वीक कर दिए, जार प्रभाव रे हमर जो वर्षाटी देखिबा पई मिलता है से वर्षार परिमाण कमी जाए एवं मरुड़ी मध्य देखिबा पई मिले। व्हाट इफेक्ट डज ला नीना टिपिकली हैव ऑन इंडियन मानसून प्रेसिपिटेशन। ला नीना रो प्रभाव कोन। ला नीना स्ट्रेंथन द मानसून यूजुअली ब्रिंगिंग नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल एंड बाउंटीफुल हार्वेस्ट। ला नीना कोन करे जेति की वर्षा करिया कथा सेति की वर्षा करे एवं ताठारु अधिक मध्य वर्षा कराई थाए। Which standard oceanic index is used by NOAA to monitor and declare ENSO phases? NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration से गोटे इंडेक्स यूज करे, से इंडेक्स टी होची ओशिनिक नीनो इंडेक्स। In which exact geographic region of the Pacific Ocean is the ONI measured? Oceanic Nino Index गोटे एक्जाक्टली गोटे रीजन अच्छी पैसिफिक ओशन सेटारे काउंट करा जाता है।
एटा होची निनो 3.4 region located between 5 degree north to 5 degree south latitude and 120 degree west to 170 degree west longitude एई भितरे ONI मेजर करा जाई थाए। What a specific SST temperature anomaly threshold defines an official El Nino states? SST temperature mean sea surface temperature. An ONI sea surface temperature anomaly of 0.5 degree Celsius or higher for at least 5 consecutive overlapping 3-month period. जदि 3 मास भितर at least 5 consecutive overlapping 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़िया पे देखिया को मिलता है सेटा को कहा एसएसटी टेम्परेचर। व्हाट एसएसटी anomaly threshold officially defines a La Nina episode? यार आंसर होची an ONI sea surface temperature anomaly of -0.5 degree Celsius or lower for at least 5 consecutive overlapping 3 months period. El Nino पाई +0.5 degree Celsius, La Nina पाई -0.5 degree Celsius. How does El Nino affect deep water upwelling along the South American coast, that is Peruvian coast? यार आंसर होची it severely suppresses or stops coastal upwelling preventing nutrient rich cold deep water from rising. माने बॉडी पाकू ड्रिप वाटर टा जो राइज करियो ताकू डिफेक्ट पकाई थाए ता ऊपर। What impact does La Nina have on marine upwelling of the Peruvian coast? पेरुवियन कोस्ट ऊपर ला निना रो प्रभाव कौन रही है? It enhances coastal upwelling, bringing abundant cold, nutrient rich deep waters to the surface. एहार प्रभाव रे कोल्ड टा बढ़ी थाए, ठंडा टी बढ़ी थाए एवं न्यूट्रिएंट रिच डीप वाटर्स टू द सरफेस एवं न्यूट्रिएंट रिच डीप वाटर टा सरफेस को आसी थाए। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक काउंटर पार्ट ऑफ एल निनो नोन एज? एल निनो नोन रो एटमॉस्फेरिक काउंटर पार्ट होची सदर्न ओसिलेशन जहाँ की पीरियोडिक एयर प्रेशर फ्लक्चुएशन अक्रॉस द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। व्हाट इज द साइन ऑफ द सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स ड्यूरिंग एन एल निनो इवेंट? यार आंसर होची नेगेटिव साइन रहिता है, हाई प्रेशर ओवर डार्विन ऑस्ट्रेलिया एंड अनयूजुअली लो प्रेशर ओवर ताहिती। व्हाट इज द साइन ऑफ द सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स ड्यूरिंग ए ला निना एपिसोड? आमे जानले एल निनो पाई नेगेटिव साइन किंतु ला निना पाई पॉजिटिव साइन, हाई प्रेशर ओवर ताहिती एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर डार्विन ऑस्ट्रेलिया। What is El Nino Modoki and how does its ocean warming pattern differ from traditional El Nino? Traditional El Nino ठारो El Nino Modoki किपरि differ करिथाय? Modoki features maximum warming in the central Pacific while the eastern and western Pacific remains cooler. Modoki रे कोन करे maximum warming करथाय सेंट्रल पैसिफिक रे से अधिक गरम करिथाय किंतु ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक जेउ भली भाबे कूलर थिला सेही भली भाबे कूल रहिथाय। Who was the British meteorologist who first discovered the southern oscillation pressure pattern? First discover करथिले southern oscillation pressure pattern को सर गिलबर्ट वाल्कर केबे करथिले जेतेबेले कि से 1920 मसिया रे इंडियन साउथ वेस्ट मॉनसून को प्रेडिक्ट करथिले ठीक सही समय से डिस्कवर करथिले southern oscillation pressure pattern को। How does El Nino affect the depth of the oceanic thermocline in the eastern Pacific? यार आंसर होची it depends the thermocline in the eastern Pacific, flattening the thermocline slope across the Pacific. How does La Nina alter the oceanic thermocline across the Pacific Ocean? It steepens the thermocline, making it shallower in the east and deeper in the west. Shallower करिबा पेरू रीजन रे और डीपर करिबा इंडोनेशिया रीजन रे। What severe weather conditions occur in Peru and Ecuador during a strong El Nino? यार आंसर होची टॉरेंशियल रेनफॉल आउ कोन करता है सीवियर फ्लडिंग मध्य करता है एवं डेवास्टेटिंग मड स्लाइड्स दैट इज कोस्टल लैंडस्लाइड्स मध्य करिता है। What climatic impact does El Nino inflict on Australia and Indonesia? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ऊपर एल निनो रो की प्रभाव पड़ता है? यार प्रभाव रे सीवियर ड्राउट होता है, वाटर शॉर्टेज घटिता है, क्रॉप फेल्युअर होता है एवं वाइड स्प्रेड बस फायर्स और वाइल्ड फायर मध्य घटिता है। व्हाट वेदर पैटर्न डज ला निना ट्रिगर ओवर ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ वेस्ट
एशिया ऑस्ट्रेलिया साउथ वेस्ट एशिया ला निना प्रभाव कौन देखा मिलता है। ला निना प्रभाव में यही अंचल में हेवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग मॉनसूनल स्टॉर्म्स एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्लडिंग, यार प्रभाव में फ्लडिंग देखा मिलता है। एल निनो प्रभाव में मरुड़ी देखा मिलता है। Which prominent historical Indian drought years were strongly associated with El Nino? El Nino सहित हमारा associated है Indian subcontinent. Severe drought years such as 1972, 1982, 1987, 2002, 2009 and 2015 यही ईयर गुड़िकर ड्राउट देखा मिली इंडियन सबकंटिनेंट रे। Does every El Nino occurrence guarantee a drought in India? कौन सब एल निनो ड्राउट करि पारे माने मरुड़ी पकाइबारे ग्यारंटी देता है ना, या ठीक नहीं। नॉट ऑल एल निनो years cause a drought in India. Around 60% lead to drought depending on Indian oceanic condition. आमर इंडियन ओशनिक कंडीशन अनुसार पाखापाखि 60% lead करे ड्राउट को हवा पाई। What Indian ocean climate phenomenon can neutralize the negative impact of El Nino on Indian monsoon? Our answer is a positive Indian ocean dipole. How does El Nino affect Atlantic Ocean hurricane activity? Atlantic Ocean जो hurricane activity रही ता ऊपर El Nino की प्रभाव रहता है। It suppresses Atlantic hurricane formation by increasing vertical wind shear across the basin. वर्टिकल वाइंड शेयर को इंक्रीज करके यह अटलांटिक हरिकेन को सप्रेस करता है। हाउ डज ला निना इन्फ्लुएंस अटलांटिक हरिकेन एक्टिविटी? इट एनहांसेस अटलांटिक हरिकेन एक्टिविटी बाय लोअरिंग वर्टिकल वाइंड शेयर लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर स्टॉर्म्स। यह एनहांस करिवो, ला निनाटा एनहांस करे और एल निनोटा सप्रेस करे। व्हाट इज मीन बाय ईएनएसओ न्यूट्रल फेज? एल निनो सदर्न ओसिलेशन न्यूट्रल फेज को आम कहले कौन बुझू? ए पीरियड व्हेन ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन टेम्परेचर्स एंड ट्रेड वाइंड्स आर नियर देयर लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज। जेतेबेले गोटे लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज रे रहिता गोटे पीरियड को से पीरियड टा कह जाय ईएनएसओ न्यूट्रल फेज। व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ एन एल निनो इवेंट? एल निनो इवेंट रा टिपिकल ड्यूरेशन ता माने केते समय पर्यंत एल निनो इवेंट देखिया पे मिलता है? Typically 9 to 12 months, usually developing in spring, peaking in winter and decaying by spring or summer. प्रथमे डेवलप हुए याटा स्प्रिंग रे, धीरे धीरे तार मात्रा बढ़े विंटर रे एवं धीरे धीरे कमी जाए समर बेल को। पाखापाखि यह रही है 9 ରୁ 12 मास पर्यंत। हाउ डज द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ ला निना कंपेयर विथ एल निनो? एल निनो सहित कंपेयर कले ला निना इवेंट्स टेंड्स टू लास्ट लॉन्गर देन एल निनो, ऑफन परसिस्टिंग बिटवीन 1 to 3 years। जोठी एल निनो परसिस्ट करे 9 to 12 months, ला निना परसिस्ट करे 1 to 3 years। व्हाट इज ए ट्रिपल डीप ला निना? ट्रिपल डीप ला निना कहले कोन बुझू? ए रेयर मल्टी ईयर क्लाइमेट पैटर्न वेयर ला निना स्पैन्स अक्रॉस 3 consecutive northern hemisphere winters। जदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर्स रे 3 थर लगातार ला निना देखिया पाई मिलता है ताकू हो जाए ट्रिपल डीप ला निना। हाउ डज एल निनो अफेक्ट ग्लोबल एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर? ग्लोबल एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर रे एल निनो प्रभाव कौन देखिया पाई मिलता है? इट कॉजेस ए शॉर्ट टर्म स्पाइक इन ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर्स ऑफन मेकिंग एल निनो ईयर्स रिकॉर्ड वार्म ग्लोबली। यह कौन करे? ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर को शॉर्ट टर्म पाई इंक्रीज कर दिए। व्हाट शॉर्ट टर्म अफेक्ट डज ला निना एक्सर्ट ऑन ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर? इट एक्सर्ट्स ए टेम्पररी कूलिंग इफेक्ट ऑन ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर। एल निनो करिवो, एल निनो टेम्परेचर को बढ़ाई देबो किंतु ला निना टेम्परेचर को कमाई देकी कूलिंग स्टेज रे ताको रखिवो। What is the normal direction of equatorial trade winds under non-ENSO condition? यार नॉर्मल डायरेक्शन टी रहइबो ईस्ट टू वेस्ट, ड्रिवन बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स। What name is given to the vertical east-west atmospheric circulation cell along the equator in the Pacific? यह को कहा जाता है वाकर सेल और ताको मध्य कहा जाता है वाकर सर्कुलेशन।
What does the center of atmospheric rising air and heavy rain shift during an El Nino year? El Nino year रे atmospheric rising air ऊपर की प्रभाव पड़ता है? It shifts eastward from the western Pacific toward the central and eastern Pacific Ocean. El Nino टा shift करता है western Pacific रू central and eastern Pacific. How does El Nino typically influence winter weather in North America? Northern North America रे El Nino की प्रभाव देखने पे मिलता है. It brings warmer and milder winter conditions across Canada and the northern United States of America. What is the impact of La Nina on winter temperatures across North and Northwest India? La Nina कौन प्रभाव देखा पे मिलता है नॉर्थ और नॉर्थवेस्ट इंडिया रे? It brings colder than normal winter temperatures and severe prolonged cold waves. माने जेति की हमर ठंडार तो परिमाण थाए यही से ठंडार परिमाण टाकू बढ़ाई देता है. Which key South American fishery experiences massive commercial collapses during El Nino? Our answer is the Peruvian Anchoveta fishery, one of the world's largest monospecific commercial fisheries. सेटारे कौन करता है माने massive commercial collapse देखिया पे मिलता है El Nino प्रभाव रे. Which equatorial Pacific zone is designated as the Nino 1+2 region? यार आंसर हो the extreme coastal region of South America जहाँ की रही 0 degree to 10 degree south latitude और 90 degree west to 80 degree west longitude near पेरू पाखापाखि रे ए region टी रही. Where is the Nino 3 region located in the Pacific Ocean? यार आंसर हो the Eastern Tropical Pacific जहाँ की 5 degree north to 5 degree south latitude and 150 degree west to 90 degree west longitude region रे अच्छी. Which geographic area defines the Nino 4 region? The Central Equatorial Pacific, that is 5 degree north to 5 degree south latitude and 160 degree east to 150 degree west longitude भितर यही geographical area टी रहता है Nino 4 region टी रहता है. How does El Nino affect cyclonic storm formation in the Arabian Sea? Arabian Sea रे El Nino किपरि affect करता है? It often leads to higher SSTs, that is sea surface temperature in the Arabian Sea, increasing potential cyclone formation there. माने ये कौन करता है cyclone formation को टिके बढ़ाई देता है Arabian Sea रे. What is the impact of La Nina on Kharif agricultural output in India? It significantly boosts Kharif crop production, that is paddy, pulses, oilseeds and sugarcane due to ample rain. यार प्रभाव रे खरीफ क्रॉप रे सिग्निफिकेंटली बूस्ट देखिया पे मिलता है अर्थात हमें अधिक खरीफ चाषटा भल रे होइता है. सेति पई ला निना को कह जाय कृषक रो बंधु मध्ये कह जायता है. Which ocean observation network is crucial for real time monitoring of ENSO across the Pacific? यार आंसर होची the TAO or Triton Mode Ocean Bioarray across the tropical Pacific. What atmospheric pressure condition at Darwin, Australia signals an El Nino event? यार आंसर होची unusually high sea level atmospheric pressure. सेता लगी high sea level atmospheric pressure रो हाई हे जीवो सेते बेला हम जानिबा कि एल निनो इवेंट घटी छी. हमर आज रो लास्ट क्वेश्चन. Why is mastering ENSO dynamics critical for Odisha specific competitive exam preparation? Because ENSO dictates Odisha summer monsoon reliability, agricultural stability, drought vulnerability and extreme weather events. एथि सहित आम्भे आपनक सहित मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टी एमसीक्यू डिस्कशन करिसंती एल निनो और ला निना संपर्क रे. एही क्लास टी आपण मानको भलो लागितिबो. एही क्लास रो पीडीएफ टी आपण माने चाहिले हमर टेलीग्राम चैनल लो डाउनलोड करि पारे. हमर टेलीग्राम चैनल रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे दी छी. जदि क्लास टी भल लागि थाए तबे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया पे भूलिबे नै एवं निजर संग मानक सहित मते शेयर करिया पे भूलिबे नै. वीडियो टी को कंप्लीट देखतिबारु आपनको अशेष धन्यवाद.